This conference will now be recorded. Sure, I can go first. So, I have 20 plus experience in IT. Very initially started as a Java developer, but then moved on to testing and then program management and delivery management, those things. Currently, I am as a solution architect in the data and AI space, right? So, not really confined or working on a specific cloud provider. It's mostly cloud agnostic. It's all the data capabilities in any of the cloud or also on prem. So, as a solution architect, I do work with the technical SMEs in order to come up with the solution for the clients, which can be related to data migration, data governance, data quality, or anything which is related to data, basically. So that's kind of high level my experience. And as far as cloud is related, I would say I do understand the concept of cloud, but definitely have not gone much deep into any of the clouds which we have like Azure or GCP or AWS. Um, yeah, that's pretty much. Okay, great. Means you are okay. You are good with database services. It may be on premises or it may be a cloud, right? Yeah, I mean, I do understand. I've not like Hmm. very much hands on it, but I've done a lot of data warehousing testing, data warehousing projects. So I do understand the concept of data, database, server, and all that stuff. Yeah, the basic is definitely there. Okay. So in case of database management, what are the responsibility? I'm talking about the responsibility in the sense you are responsible to take the backup, create a application of our database, joining with multiple application or website. These types of activity you have already performed. No, no, I've not performed those. As far as data warehousing, I used to be part of the testing team, so kind of, validating all the data which is being, moved from source to target and validating on the reports, validating the mappings, those things. What about security and backup? Security and backup, no. फाइन नो प्रॉब्लम मीन्स अगर अगर हम बिल्कुल लेमन टर्म में बात करें तो फॉर एग्जांपल मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट रन कर रही है तो उसका जो डेटाबेस का बैकएंड है उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना एपीआई के थ्रू दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, अच्छा मतलब हैंड्स ऑन तो नहीं किया है, but I can definitely understand, but I've not done it hands on. fine no problem last question means I hope you have idea about the architecture level of components Yes, architecture level of components like I'm talking about the storage, networking, server, yes. VPN, security, Huh. backup. These Yeah. all are the components which is considered as the architect, correct? Right, right. ठीक है ठीक है so as per your experience I don't think कि उतना ज्यादा टफ ये कंपोनेंट लगेंगे या इम्प्लीमेंट करने में हमें कोई तकलीफ होगी बिकॉज यू नो दैट कि जो एक्टिविटी हम ऑन प्रोमाइसेस पे करते हैं आ रहे हैं अभी तक मीन्स अपने डेस्कटॉप लैपटॉप सर्वर या जो भी ऑन प्रोमाइसेस की मशीन्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म इन द True. सेंस यू नो दैट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल मल्टीपल प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल हमें सिलेक्शन करना है कि हमें किस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करना है एंड इफ यू गुड Right. विद अ पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर तो डेफिनेटली जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं ना वो केवल अपने रिसोर्स का नेम और इम्प्लीमेंट करने का तरीका चेंज कर देते हैं बाकी सारी सर्विसेज आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी AWS, Azure, गूगल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड या जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं हर Hmm. सभी ने सेम ही सर्विसेज इंप्लीमेंट कर रखी है बट उनका नाम चेंज कर रखा है उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका चेंज कर रखा तरीका चाहिए. है ना Hmm. और कहीं ना कहीं इन दोनों इन सभी प्रोवाइडर्स के बीच में यू नो दैट कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आए दिन हर 10 दिन 15 दिन में कुछ ना कुछ ये पोर्टल पे चेंजेस करते रहते हैं इसीलिए किसी भी क्लाउड एक्सपर्ट के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एटलीस्ट हर दूसरे दिन नो मैटर उसको बहुत सारी चीजें आती हैं क्लाउड के ऊपर बट हर दूसरे दिन वो पोर्टल को ओपन करके जो सर्विसेज है उनको बारी बारी से देखें और चेक करें कि क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑन Gotcha. द डेली
इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर एक प्रोवाइडर को कुछ ना कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। इफ वी टॉक अबाउट अवर Azure और Amazon वेब सर्विसेज 2016 की बात करें और 2022 की बात करें, आप पोर्टल में अगर आपको दोनों पोर्टल का व्यू दिखाऊं तो मीन्स हम्म। 2016 के अंदर कुछ भी नहीं था, नथिंग था, बहुत ही आसान था उस टाइम पे सर्टिफिकेशन गेन करना या उस टाइम पे चीजों को समझना। बट nowadays they implemented lots of component. Got it? गॉट इट। सभी के केस में होता है, ठीक है, विंडो बना दिया, विंडो के केस में हम 6 महीने में, साल भर में अपडेट कर रहे हैं, बट दिस इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट? आए दिन उनकी R&D टीम जो है हमारे कमेंट्स को पढ़ती है, इनके ट्विटर हैंडल जो रहते हैं वो हमारे कमेंट्स को पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहा है, क्या उसको चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज आल्सो मींस बग्स बग्स फाइंड करने के लिए इन्होंने प्रॉपर तरीके से हमें अलाउ कर रखा है कि इफ यू फाइंड एनी बग आप डायरेक्टली इन्फॉर्म करिए, फिर वो बग लेवल के अकॉर्डिंग आपका इम्प्लीमेंट करके पोर्टल के ऊपर चेंजेस किया जाएगा। सो दीज ऑल आर द एक्टिविटी विच इज मैनेज बाय द प्रोवाइडर ऑन डेली बेसिस। ठीक है, एनीवे नो प्रॉब्लम, एज पर योर एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक उतना ज्यादा कुछ इशू आएगा हमें। सोहेल, व्हाट अबाउट यू? It was Sohail who was speaking. Yeah. Very good. So, but I mean, like, one good thing is, like, so I kind of, carry the same experience as Sohail, like 20 plus years of IT experience. And we have been working together for a long time as well. Like, so most of our job has been more or less the same. So I also started as a developer, but that was in the mainframe side, Manjit. And then, I Mhm. mean, I kind of went across and started with other areas including testing. I mean, I've got some experience in cloud, but I mean, it's all scattered. It's not formal training or anything like that I got, but I mean, I've got some experience here and there in the cloud area, primarily on data migration, like, from on-prem to cloud. I mean, like, on multiple platforms, how do we build the pipelines and get the data in? That's the only kind of, practical work, or like, that's the only kind of, exposure that I have. For anything that will need to be done across the platform, like, including the building of the infrastructure platform, security layers, all those things, I go to subject matter experts, get their opinion, and then build estimates and build solution based on that. So, I mean, it's just like, whatever they tell, I just try to do that. So that kind of makes me curious to understand how it all ties up, like, how the cloud security part, how the entire cloud architecture works. That was the Okay. Okay. So in case of your migration project, so you migrated only the data or any kind of lift and shift activity? yeah. So it's primarily lift and shift, replatform kind of activities. Okay. So you migrated the data from on-premises to cloud, correct? Correct, correct. Which types And of it can data? be all, sorry to interrupt, and it can be also from one cloud to the other cloud, from AWS to Azure also it can be. Okay. Cloud to cloud migration, cloud to on-premises migration, on-premises to cloud migration, multiple. क्लाउड टू ऑन प्रेमाइज तो कभी किया नहीं है। आई डोंट नो इफ यू नो इफ यू डन एनी ऑफ दैट। No, no, no. We also need what happened. Sometime क्या हुआ कि हमने मान लीजिए I'm just going to establish my website. I'm just going to establish my server on Azure portal. But after some time, I'm unable to feel good, or I'm facing some issues related to the security. I don't want to carry my virtual machine from Yeah, yeah. Azure. No, I mean what I'm trying to say is we've not done it in our real life. It can happen, of course. That is definitely a possible use case, but So, किया नहीं है कभी। no problem, no problem. ठीक है, ठीक है. So okay, good. That's really good that you have idea about कि इतने तरीके के migration activity हो सकती है with the help of cloud, right? Means we are able to transfer our resources from one cloud to another cloud, या फिर on premises से cloud, हम्म। या फिर cloud से on premises. So these all are activity possible है हमारे cloud के case में. Anyway, और ज्यादा that's और yeah. ज्यादातर हमने डेटा के रिलेटेड किया है माइग्रेशन, नथिंग रिलेटेड टू एप्लीकेशन। Data in the sense, you're talking about the structured data, यस। data based on the SQL, Yeah, your MySQL, or yeah, kind of, your right? warehouse. It can be your warehouse, Yeah, can be your data lake and data mart, or exactly. ETLs. Nothing related to application. No problem, no problem. Okay. Not an issue. Our agenda, as we discussed, we are responsible to be expert as a solution architect. So this is the proper blueprint of AWS solution architect.
SAA C02, अभी इन्होंने वर्जन चेंज किया है, C01 था पहले, C0 Okay. था पहले, and now we need to prepare ourselves for C02, right? The second version of our AWS Solution Architect certification. It's our responsibility. We should know each and everything related to the content. वो हम implement करके भी देखेंगे. But certification से related तो इन्हीं के rules को follow करेंगे, इन्हीं के blueprint को follow करेंगे, ताकि जब exam के time पे हमारे पास question आए screen पे, तो उसमें कोई भी ज़्यादा surprising moment ना हो, क्योंकि हमें पहले से थोड़ा बहुत idea होना चाहिए, right? So talk about the means questions की बात करें तो question की एक limit होती है. Limit in the sense I'm talking about the number of questions. जब certification की बात करते हैं तो 47 question to 65 question के बीच में इनके पेपर के slots रहते हैं. Means एक particular time पे इनके पास multiple sets of question रहते हैं. What is what I'm saying? Sets of question. The meaning of sets of question. matlab, I mean, like the questions can range between 47 to 65, is it? Exactly. And at a time पे इनके पास मल्टीपल सेट्स भी रहते हैं. 25 से 50 25 से 30 सेट्स रहते हैं. मान लीजिए हमने दोनों लोगों ने एक ही लोकेशन पर सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड किया, ठीक है, एक हाँ. दिन सेम टाइम के लिए, सेम डेज या सेम डेट के लिए रजिस्टर किया, तो मे बी चांसेस 99% चांसेस रहता है कि दोनों लोगों का जो क्वेश्चन रहता है वो डिफरेंट रहेगा. गॉट इट? समझ जो गया. जो क्वेश्चन हो सकता है उन्होंने अलाइनमेंट अलग तरीके से कर रखा हो. आपका 5वां क्वेश्चन मेरा 25वें नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, या मेरा 30वें नंबर का क्वेश्चन आपके दूसरे पे आ रहा है. ऐसे भी चेंजेस होते हैं. बट हमें दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है. एक इसका एग्जाम का ड्यूरेशन 120 मिनट्स, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चंस जो होते हैं 47 से लेकर 65 के बीच में आपको मिलेंगे. एंड ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स. जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें हमें जो नॉर्मल राइट आंसर रहेगा उसको हमें फाइनल करना होगा, मीन्स उसे क्लियर करना होगा, राइट? Yeah. नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट कि जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, इन्होंने पूरे एग्जाम की थ्योरी ही चेंज कर दी है. बिकॉज आई कंप्लीटेड माय AWS solution architect in year of 2017, और आल्सो आई क्लियर माय AWS solution architect एग्जाम लास्ट ईयर भी मैंने एग्जाम क्लियर किया था. तो दोनों का अगर हमने कंपेयर किया तो लास्ट वाला जो एग्जाम था वो हमने डम्प्स के भी ऐप पे क्लियर कर लिया था, कि डम्प्स थे मेरे पास 200-250 क्वेश्चन के, वो आसानी तरीके से हमने उसको तैयार करके 2 महीने के अंदर वो क्लियर हो गया. बट नाउ डेज जो हम एग्जाम की बात करते हैं ना, उसमें से जितने भी क्वेश्चन है ऑल आर रिलेटेड टू द सिनेरियो बेस. मींस अगर आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं किया है तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पुटअप क्या करना चाहता है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्रॉपरली. किसी भी डम्प से वो चीजें नहीं मिल पाती. दैट्स वाई इन्होंने लगभग 60% क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस, 40% क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल और डम्प्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. क्लियर? Wow. Yeah. They categorize the examination in 4 different module. यहाँ पे डोमेन का मीनिंग है मॉड्यूल. पहला है डिजाइन रिसाइलेंट आर्किटेक्चर, जिसमें हम 30% क्वेश्चंस पाएंगे अपने फाइनल एग्जामिनेशन में. देन हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर्स can help us up to 28% questions in final examination. Secure application and architecture 24-25% क्वेश्चन ये इसमें फाइनल में आएगा. एंड लास्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू द डिजाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर, जिसमें अलग अलग सर्विसेज आएंगी जिसके जरिए हम अपने कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजों को मैनेज करेंगे, विच इज द हेल्प अस अप टू 18%. तो ये सेग्रीगेट कर दिया इन्होंने ताकि आसानी से हम इस चीजों को तैयार कर सके एग्जामिनेशन में. ये पहला मॉड्यूल है जिसके अंदर we'll discuss about the basic of our cloud infrastructure. कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है, कैसे Azure ने AWS ने बैकएंड में चीजों को इंप्लीमेंट कर रखा है, जोन क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, इसके अंदर जो व्हाट वी कैन से दैट रीजन एंड जोन्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Now these all are the conceptual part, but talk about the practical activity. So this is the practical and implementation activity जो बहुत ही ज्यादा important है. They categorize in various part: compute, cost management, database, disaster recovery, high availability, management and governance, and microservices, which is really important for us. We'll discuss about the migration, networking connectivity, content delivery network, which is considered as a CDN, security कैसे manage की जाती है, सर्वरलेस कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्टोरेज सर्विसेज.
So these all are the core content that we need to implement with the help of AWS portal. Directly हम अपने free trial account का इस्तेमाल करके इन सभी resources को implement करेंगे and try to understand about the real environment में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है. Clear? These all are the topics that we need to cover in our training. So इसमें सारी चीजें हम discuss करेंगे. Means like as EC2 क्या है, bin stack क्या है, EKS क्या है, या फिर container services क्या होती हैं. डेटाबेस में जितने भी डेटाबेस आपको आरडीएस में मिलेंगे, अरोरा डीबी, डायनेमो डीबी, या फिर अदर जो सर्विसेज है लाइक सिक्वल, माई सिक्वल कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसको, ऑटो स्केलिंग, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड फॉर्मेशन, बैकअप, क्लाउड वॉच, दीज ऑल आर द सर्विसेज. अभी हम पोर्टल ओपन करेंगे तो ये सारी चीजें हमें वहां पे दिखाई पड़ती है. क्लियर? कंटेंट ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं. तो ये सारे एजेंडे हैं, ये सभी टॉपिक्स हैं जो हमें फाइनली अपने ट्रेनिंग में कवर करते हैं. इज इट ओके? Yeah. Fine. So these all are the content जो हमें follow करना है. But to start any cloud technology, किसी भी cloud computing के content को या उनकी service को implement करने के लिए you should know about a backend. Means कि जो ये cloud provider हैं, इन्होंने अपनी services को किस तरीके से implement कर रखे हैं और किस तरीके से हम अपने आप को sign up करेंगे और how we can use these services in our real environment. Clear? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है. आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग. एक सिंगल वर्ड में अगर हमें डिफाइन करना है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, सो हाउ वी कैन डिफाइन दैट, व्हाट यू कैन से दैट, व्हाट इज It क्लाउड is कंप्यूटिंग? it's a processing of processing that is happening in a secured third party platform. I think it's of more like an on-demand provider of your services, your processing, um, which ensures secured and fast, you know, It transactions. gives the ability to scale up or scale down your resources based on your need. Right. These all are the features. If we talk about the DR, failover, disaster recovery, so these all are the features. ठीक है ना, जो Yeah. क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किस तरीके का कंपोनेंट, इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स रखेंगे ताकि हम चीजों को ताकि हम अपने क्लाइंट को या कस्टमर को बता सके कि आई एम एबल टू प्रोटेक्ट योर रिसोर्सेज अप टू 99.99%. Got it? Yeah. Yeah. Try to understand about the cloud computing from very basic. So as per your experience, you know that you are in IT from last 20 years, so you know very well about the market requirement, right? Hmm. I'm in IT from last 14 years. Okay, I started my career in IT in 2008. Okay, you know that अगर हम थोड़ा सा अपने इस मार्केट IT की जर्नी के बारे में देखें तो you know very well about because you guys are related to the development part, you guys are related to the database part. थोड़ा सा मार्केटिंग लेवल की बात करें तो यू नो दैट कि 2007-8 में ऐसा था कि आईटी के केस में इफ यू आर सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर, मींस अगर आपके पास सिस्को का सर्टिफिकेट है या सिस्को के डिवाइसेस आपको मालूम है तो मार्केट में काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी रिलेटेड टू द सिस्को इंजीनियर. धीरे धीरे उनका टाइम खत्म हुआ, फिर माइक्रोसॉफ्ट का टाइम आया. माइक्रोसॉफ्ट के केस में अगर इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स लाइक एमसीएसए तो उस केस में काफी अच्छी ज्यादा मींस डिमांड थी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर के लिए. फिर उसके बाद वीएमवेयर आया. वीएमवेयर इज आल्सो टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो वर्चुअलाइजेशन का सेटअप देता है, लाइक दैट. तो मार्केट में ये आईटी के कुछ प्रोडक्ट हैं या कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज हैं जिन्होंने पूरे आईटी मार्केट को मींस एक तरीके से जॉब से रिलेटेड चीजों को पकड़ के रखा. Nowadays, from last 2 years, abhi just starting hai. Nowadays, cloud computing is also a type of technology, just a type of technology which is help us to build our resources, to build our IT resources directly on a particular portal, and we are able to access these resources 24/7 from anywhere, from any location. Is it correct? Right. Yes. You establish your company in India location. For example, you establish your company in India location, and you establish the entire resources from cloud. So I think we are able to control, we are able to manage
our resources from any location of any location in the world. हम ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके अपने रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, हम यूएस में बैठ के कर अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं कि हमारी जो इंडिया की ई कॉमर्स वेबसाइट है वो उसका स्टेटस क्या है. वी आर एबल टू सी द लोड ओवर अ वेबसाइट, वी आर एबल टू कंट्रोल द सिक्योरिटी, या जो भी एक्टिविटी करनी है हम क्लाउड पे बैठ करके कर सकते हैं. इज इट करेक्ट? Yes. Cool. So for better understanding, I'm just going to categorize our cloud computing in various parts to understand कि cloud किस तरीके से task perform करता है in backend. So the first one, if we talk about the pillar of cloud computing, so I hope you all of you uh, have idea about the infrastructure as a services, platform as a services, and Yeah. third one is software as a services. Is Software. it correct? कहीं ना Yes. कहीं ये चीजें हमें सुनने में मिली होगी कि अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग में इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. इज इट Yeah. करेक्ट? Yes. So what do you think about, just need to know about with examples. कुछ एक एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कुछ एक एग्जांपल प्लेटफॉर्म का. Infrastructure can be a regular, like a virtual machine, right? So that's also kind of provided as a service on cloud. You just spin up a EC2 on a AWS in few minutes, and then you have all your storage, you have all the other like infrastructure components in there as a service. आपको Great, अलग से storage बनाने की जरूरत नहीं है. It's a service which you are using. great. How much ever Infrastructure memory or storage you need, how much ever, yeah. Yeah. एग्जैक्टली मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए वो आप डायरेक्टली पोर्टल से उठा सकते हैं. इट मे बी वर्चुअल मशीन, इट मे बी सर्वर, इट मे बी स्टोरेज, इट मे बी नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, बैकअप, या कुछ भी हो सकता है. इज इट करेक्ट? Exactly. Yes. बट these all are the examples. ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं. True. If we talk about the meaning of IaaS, internet infrastructure as a services. So if we talk about the meaning of infrastructure as a services, so it's considered as a, you can say that it's a type of manageable service. True. The meaning of manageable services means you are responsible to manage your resources up to 75% task. User responsible to manage 75%, और जो client रहेगा ना, we talk about provider, 25% की responsibility provider की रहेगी. Provider responsible to manage services up to 25%. That's it. We have a number of examples: virtual machine, storage, database, networking. Okay, these all are the resources which are considered as a infrastructure as a services. Storage की बात करें, SQL database की बात करें, या network की बात करें, ये सभी services आपकी consider की जाएंगी क्या? As a infrastructure as a service. Is it clear? Mhm. Yeah. The meaning of manageable और ये 75% की meaning क्या होगी? 75% task managed by the provider. We have a number of examples. एक बहुत ही छोटा सा example. The virtual machine that you purchase with configuration of 4 gig RAM, 2 core of CPU और 100 gig की hard disk का आपने decide किया था. Clear? 4 GB of RAM, 2 core of CPU, 100 gig of hard drive. इस कॉन्फ़िगरेशन में आपने VM को परचेज किया, एवरीथिंग इज फाइन, बट आफ्टर 1 मंथ यू रियलाइज कि ये 4 GB में तो काम नहीं होने वाला है. वी मस्ट नीड टू ऐड up to 8 gig of RAM, and we need to provide a high data space, high hard drive storage space to put our data. 100 GB की जगह 500 GB स्पेस हमें रखना है. तो these all are activity you need to perform by self. Azure बोलेगा, AWS बोलेगा, या कोई भी प्रोवाइडर बोलेगा कि ठीक है आप अभी 4 GB की रैम इस्तेमाल कर रहे हो या 100 GB की हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू चेंज बाय सेल्फ. और जिस दिन से आप चेंजेस करेंगे उसी दिन से आपका जो चार्जेस है, जो आपका कॉस्ट है Billing. VM का, वो बढ़ जाएगा. दैट्स इट. बट यू नीड टू चेंज बाय सेल्फ. आपको करना पड़ेगा, बट वो आपकी बिल में हम ऐड कर देंगे उस दिन से. क्लियर? So basically, you're saying that if I'm buying a VM, there are standard configurations, right, of the VM which I can buy, right? And then उसके ऊपर अगर मुझे कुछ change करना होगा, that will be my responsible to scale it up. Exactly.
and we must need to perform task manually. हमें अपनी तरफ से इसको perform Or करना it can पड़ेगा. also happen that there is another standard configuration which is available which matches my need, so I can take that as well. Exactly. And number of you can say that configuration based virtual machines are available. Our Yeah. responsibility, we just need to decide कि हमें किस तरीके का configuration चाहिए as per our requirement, which is proceed. हमें जिस तरीके का configuration चाहिए हम उस पे existing VM में change कर सकते हैं, नए VM में purchase कर सकते हैं. It's fully depend upon us. Clear? Yes. And That what would be about the 25% of provider? वो क्या करते हैं? 25% provider which is responsible to manage the backend host. इस मशीन को पावर, इस मशीन को नेटवर्क, इस मशीन के सीपीयू और रैम के यूसेज की मॉनिटरिंग सिर्फ 25% में होगी. बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. Okay. कितना रैम रखना है हमें, कितना सीपीयू रखना है, कितनी हार्ड डिस्क लगानी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी. Okay. Is it okay? Please clear? Yes. Yes. Yeah. Cool. As it is, storage का एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल यू परचेज 100 TB ऑफ स्टोरेज फ्रॉम AWS. ठीक है. So now after 6 months या after 1 year you realize कि नहीं 100 GB में 100 TB तो कम पड़ रहा है. We just need to add 50 TB more hard drive, more space in our existing storage. So you need to perform task by self. You just need to resize your storage by self. आपको अपनी तरफ से अपने स्टोरेज को रिसाइज करना पड़ेगा. Mm. Clear? That's why it considered as a manageable services, जिसमें हम responsible होते हैं सर्विस को मैनेज करने. Is it clear? Please confirm. Yes. Yeah. Yes. Yes. Cool. Let's talk about platform as a services, which is really important for us. You can say that unmanageable services, इसको हम बोल सकते हैं unmanageable service. What happened in case of unmanageable services? So in case of unmanageable services, जिसमें से 75% टास्क जो है प्रोवाइडर करेगा. ठीक है. And we are responsible to perform only 25% activity. User responsible to perform task up to 25%. Provider responsible to perform task up to 75%. Any question? We just need to आप बोल सकते हैं इसका just opposite है. I वो have a इसका number. example चाहिए. Sorry. I was saying like ना इसका examples बताएगा तो मतलब ज़्यादा. N number of example. We have a light shell. ठीक है. अभी implement नहीं किया तो थोड़ा सा doubt होगा, but I'll give you the complete practical information कि light shell क्या है. We have a beanstalk. We have a RDS. We have a multiple types of 5 तरीके के load balancer, 4 तरीके के load balancer. ये सभी हमारे unmanageable services यानी platform as a services में आते हैं. Let me explain you about the usage of these services. ठीक है. Beanstalk का एक ऑप्शन देते हैं. Beanstalk is a platform as a services based service. Think about it. If you want to host a website, आपको ना एक वेबसाइट होस्ट करनी है. इट मे बी ई कॉमर्स वेबसाइट which is designed through .NET. ठीक है ना. आपने एक वेबसाइट डिजाइन किया है .NET के लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, and you are planning to host with the help of AWS portal. Got it? Mm-hmm. We have a two different way to host. One is infrastructure as a services. Second, you can proceed with platform as a services. डिपेंड करता है कि आप कौन से यूज करना चाहते हैं. यू आर आर्किटेक्ट. यू नीड टू डिसाइड. पहले कंपेयर करिए, सर्विसेज को कंपेयर करिए, प्राइस को कंपेयर करिए, एंड परफॉर्मेंस को कंपेयर करिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू प्रोसीड. चलो, यू आर प्लानिंग टू होस्ट अ ई कॉमर्स वेबसाइट. आपने प्लान कर लिया कि हमें ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट करनी है जो हमने .NET के फॉर्मेट में बनवा रखी है. इज इट क्लियर? Yes. Think about if you want to host website with the help of infrastructure as a services. So what are the steps that you need to use? पहला स्टेप VM बनाएंगे आप. दूसरा स्टेप, अगर आपके पास विंडोज है तो आई थिंक वी नीड टू प्रोसीड विद इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज. अगर आपने लिनक्स प्रोडक्ट यूज किया है तो आप अपाचे पे जाएंगे. इज इट करेक्ट? Mm-hmm. देन बाय पब्लिक आईपी एड्रेस. पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस, आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस परचेज करना पड़ेगा. देन add to domain.
These all are the steps that you need to perform manually. और इतना टास्क करने में ना you need to perform, you need to give up to, if you expert with IAS, if you expert with Apache, then you need to give up to 1.5 से 2 घंटे टाइम लग जाएगा इसमें, ये सारी चीजें लाइव करने में। इफ यू आर Mm-hmm. एक्सपर्ट, अगर आपको आइडिया है तो, इफ यू न्यू विद दिस पर्टिकुलर टास्क, अपाचे IAS आपके लिए न्यू है, डोमेन ऐड करना न्यू है, वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करना, उस पर इंस्टॉल करना न्यू है, तो इट मे बी टेक 3 to 4 hours। क्लियर? Mm. Now you're planning to host a .NET website। एजेंडा हमारा वही है, we are planning to establish a .NET website और ये e-commerce की वेबसाइट है, ठीक है। You don't know anything, you don't know Apache, you don't know IIS, और आप ये सभी टास्क जो है ना बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, बट आपको .NET की वेबसाइट होस्ट करनी है। So what you need to do, आप प्लेटफॉर्म की तरफ जाइए। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में you just need to purchase a platform। The platform name is Elastic Beanstalk। The Beanstalk can give you option। इसको तैयार होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। It give you just a platform, and second step, upload your data। जो आपका डेटा है ना .NET की वेबसाइट, उसको आप FTP से अपलोड कर देंगे। Is it clear? No need to install IAS, no need to install Apache, no need to purchase a public IP address, everything pre-designed। सब कुछ बना बनाया है, आपको सिर्फ ये So क्रिएट करना है, प्लान सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्लान परचेज करना है, एंड यू कैन अपलोड योर डेटा, दैट्स इट। when you Within say upload 15 the minutes, data, can we install the application also out there using the Beanstalk or? 100%, Okay. Beanstalk is a one of a powerful tool of AWS that give us option to host your website, to host your game, to host your applications as well. Okay. And Mm-hmm. not only with .NET, n number of platforms are available, n number of platforms which is provided by Beanstalk। .NET, Java, PHP, Python, कोई सी भी फॉर्मेट में आपने डेटा को बना रखा है, वेबसाइट या एप्लीकेशन डिजाइन कर रखा है, each and every platform supported by Beanstalk। Okay. क्लियर? और जो Mm. टास्क आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे में आपका काम हो रहा था, वो आप विदिन 15 to 20 मिनट वर्ल्ड वाइड आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड आपका एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग मैनेज बाय प्रोवाइडर। बैकएंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर की है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि हम उसको उसमें प्लान सेलेक्ट करें और अपना डोमेन ऐड करें और अपनी वेबसाइट को मैनुअली अपलोड करें, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। इज इट ओके? प्लीज कंफर्म। So is it only for a to host a website, or like I can also host any of my like a client server application as well? Yeah, definitely. See, Okay. because in this case we don't have access of server। प्लेटफॉर्म एज Mm. ए सर्विसेज के केस में आपको सर्वर का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा कि दिस इज योर प्लेटफॉर्म। ये आपने .NET का सेलेक्ट किया था, ये आपने PHP का सेलेक्ट किया था, पाइथन का सेलेक्ट किया था, और आपके पास जो एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन, पाइथन वाली एप्लीकेशन को इस पे अपलोड कर दीजिए, एवरीथिंग विल मैनेज फ्रॉम बैकएंड। Any doubt? Please confirm। नहीं, दूसरा पार्ट समझा नहीं। I mean, server का you said that server is not going to be available, only application. I didn't get that. No, see, server in the sense you're talking about, जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने एक VM तैयार किया, राइट? Yeah. And you are able to take the RDP, you are able to access your virtual machine, you are able to make a changes with RAM, CPU, ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर पा रहे हैं मैनुअली, करेक्ट? Mm-hmm. Yeah. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू इंस्टॉल IAS या अपाचे, आप अपनी तरफ से मैनुअली इसको इंस्टॉल करेंगे, देन यू आर एबल टू होस्ट योर वेबसाइट। बट Right. व्हाट है इंफ्रा प्लेटफॉर्म के केस में क्या होता है ना, टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए और थोड़ा सा कम एफर्ट देने के लिए हमने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज को यूज कर लिया। So in this case, when you proceed with package, when you proceed with a particular plan, इसके लिए आपको प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। When you proceed with a particular plan, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा, राइट? एक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा और उस प्लेटफॉर्म के एक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जिस कॉन्फ़िगरेशन को हम मैनुअली चेंज नहीं कर पाएंगे। इफ यू वांट टू चेंज, आपको पूरा का पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा और
आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं डेटा को अपलोड करने के लिए. यू आर एबल टू अपलोड द डेटा एंड विद इन 10 to 15 मिनट यू आर एबल टू एक्सेस योर वेबसाइट या एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड किसी भी कॉर्नर से एक्सेस कर सकते हैं. बट जो मशीन का एक्सेस है उस मशीन का एक्सेस हमें इसमें नहीं मिलेगा. इज इट ओके? I'm just getting a little bit confused. Machine का access. What do मीन्स प्लेटफॉर्म का एक्सेस. जस्ट आई हैव अनदर एग्जांपल. ठीक huh. है. Infrastructure as a services, platform as a services, right? We have a two Mhm. different options. Is Hmm. it okay? Yeah. Now, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल इसमें हम यूज करने जा रहे हैं. लाइक एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है अपने पास. लाइक एज वी आर प्लानिंग फॉर पिज्जा. ठीक है, हम यहाँ पे पिज्जा का प्लान कर रहे हैं कि चलो ठीक है हम पिज्जा, दो ऑप्शन है. मीन्स हमारा पिज्जा खाने का मन है. जस्ट दो ऑप्शन है. एक तो आप खुद प्रिपेयर करो Huh. बाय सेल्फ. इज इट क्लियर ना? Yes. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. मतलब जो Hmm. भी स्टेप यूज होते हैं, जो भी मटेरियल लगता है इसमें बनाने के लिए, आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज. चलो ठीक Yeah. है, हमने बेस परचेज कर लिया, बाकी जो इसके अंदर चीजें लगेंगी वो आप रिस्पॉन्सिबल हो मैनेज करने के लिए. इज इट Huh. करेक्ट? Yes. यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपको कितना फ्लेम रखना है, कितना आपको हीट रखनी है. एवरीथिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आप बेस से बना रहे हो, अपनी तरफ से बना रहे हो. और True. कितना इसमें मटेरियल लगाना है वो आप डिसाइड कर चुके हो, राइट? True. दूसरा ऑप्शन है सिंपल सा, हमने कॉल किया. ठीक है, जो हमारे पिज्जा प्रोवाइडर्स है, हमने Hmm. कॉल किया और उनको बताया कि हमें ना ये वाला चाहिए. Hmm. ठीक है, हमें वेजीज वाला चाहिए, हमें चीज वाला चाहिए, हमें नॉन वेज चाहिए, वेज चाहिए. पर हमें केवल उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि ये बता Yes. दो. फिर वो बोलेंगे ठीक है विद इन 30 मिनट आपके पास आ जाएगा सर. इज इट करेक्ट? Yes. तो इन दिस केस दिस इज कंसीडर एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. आपको सिर्फ बताना है प्लेटफॉर्म उनको, आपको सिर्फ उनको गाइड कराना है कि मुझे इतनी कॉस्ट वाला चाहिए और ये मटेरियल वाला चाहिए, ये पर्टिकुलर टेस्ट वाला चाहिए. दैट्स इट. बाकी उनकी हेड है कि वो कैसे बना रहे हैं. Okay. बट इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, आप Mm-hmm. रिस्पॉन्सिबल हो. आप जब तक इसमें एफर्ट नहीं देंगे, सारी चीजें आप मैनेज नहीं करते हैं, आपका पिज्जा प्रिपेयर नहीं होगा. आप वीएम So परचेज कर लिए, नो वन कैन होस्ट द वेबसाइट जब तक आप उस पर आईएएस नहीं इंस्टॉल करते. true. So let's say I have an application or a system or a platform. Basically, it might be it's a employee resource platform, right? In which I have a portal through which I enter and store all the employee information in the backend database. Might be it's a SQL database, Oracle database, or anything, right? Now, can I host the entire this platform on Beanstalk? 100% we can do that. Yes. Okay, okay. So, and that would have your database and everything. No, we need to purchase a database separately, and we need to add to Beanstack. Okay, okay, आप okay. आप आप यहाँ पे देखो ना, अगर आप इस वर्चुअल मशीन को डिसाइड कर लिया है होस्टिंग के लिए, आई डोंट Huh. थिंक इस पर डेटाबेस काम करेगा. आपको डेटाबेस के लिए दूसरा सीक्वल सर्वर बनाना पड़ेगा, एंड यू मस्ट नीड टू कनेक्ट ईच अदर. Okay, okay, okay. Got it, got it. ये So मशीन. this is more for your application hosting, right? All एक your जो आपका बाकी का जो what do you call it, backend होगा या आपका mid tier होगा, that you will all have to basically buy it and link it to your machine, your VM. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Hmm. Okay. या आपकी मान लो for example you have any topics and queues, right? Which is करेक्ट. you need बिल्कुल that you will बिल्कुल. have to buy it separately and then you'll have to link it to your beanstalk or your VM or whatever it is. Exactly, exactly. So not only the Got Bean it. stack, we have a number of example for platform as a services. So this is more like a your app hosting, App hosting, correct, which will give you your whatever is needed for your app server and those things. It won't give you a web server or a database server, those things. Okay, got it. correct, correct. Cool. Thanks a lot. Yeah, welcome. Any other question? Because it's really important for us. If you really want to be expert in cloud, I'm not talking about only Amazon.
किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे चीजें आप मैनेज कर रहे हैं, तो दीज ऑल आर द बैकबोन। ये तो हमें पता ही होना चाहिए, नो मैटर कल की डेट में हमें अमेजन की जगह पे गूगल क्लाउड पे चीजें इंप्लीमेंट करनी है, एज्यूर पे चीजें इंप्लीमेंट करनी है, अलीबाबा पे चीजें इंप्लीमेंट करनी है, तो यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट कि दीज ऑल आर द सर्विसेज जिसमें हम बहुत कम एफर्ट दे रहे हैं। इट मीन्स दैट ये सभी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में काउंट होंगे। We need to perform task entire from scratch to end. It means that infrastructure as a services, because you are performing a task by self. 75% task managed by you and 25% task provided by managed by providers. Is it Mm. okay? Hmm. Yes. Any other question? Any other doubt, please? No. Can we proceed for next? Yep. We have another example, SAS, which is considered as software as a services. So a number of examples. We have a number of examples for software as a services. So बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जस्ट स्मॉल क्वेश्चन एंड as we know guys related to the mailing services, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, दे मस्ट नीड टू एस्टैब्लिश मेलिंग सर्विसेज, ठीक है। हर एक Yep. ऑर्गेनाइजेशन अपनी मेल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करता है। 50 बंदों का ऑर्गेनाइजेशन है, 50,000 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, वी मस्ट नीड टू क्रिएट अवर ऑन मेलिंग सर्विसेज। कभी भी हम जीमेल याहू मेल का इस्तेमाल, आई डोंट थिंक कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए याहू या जीमेल अकाउंट क्रिएट करके देता होगा। इज इट करेक्ट? True. Yeah. If you're working with one of a reputed organization like HCL, IBM, Google, Microsoft, so definitely abc at the rate hcl.com, abc at Hmm. the rate microsoft.com, xyz at the rate ibm.com, right? Should Yep. be associated with your private domain, which is associated with private domain, correct? Mm. Yeah. So think about, we have a very good example for to understand about the concept of software as a services. I hope you all of you heard about Office 365, guys. Yeah. Yes. Yeah. है ना? क्या होता है, just wanted to know about, just wanted to compare our Office 365 services to on premises, mailing services, क्योंकि Office 365 तो मार्केट में अभी 2-4 साल से आया, आई थिंक, राइट, which is introduced by Microsoft in year of 2015 to 17, I think May 2015 के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। Hmm. बट बिफोर दैट, उसके पहले भी हम ऑर्गेनाइजेशन की मेल यूज कर रहे हैं। 2008, 2005, 2006 तब भी हमारे पास मेल आईडी थी which is associated with our organization. So that time we usage a exchange server, I think, right? उस समय Yes. पे हम क्या यूज करते थे? exchange server यूज करते थे। And nowadays we are using Office 365. So could you please compare both, means क्या गैप है दोनों के बीच में? एक है कि मतलब exchange service, you need to be within a VPN or something like that to access the mails. So Um, Exchange, I think Exchange server, it's mostly like you had a physical server, Exchange server, whereas Office 365 right now is all in the Microsoft cloud. yeah, We must need to purchase a high configuration machine, right? Yeah. correct. And Based as on, Vinod said, to access that your email, which was an Exchange server, I think you had to be in that particular VPN, that company VPN. Otherwise, you could not have accessed the emails. no. It's not mandatory. In very rare Right. case, we need to connect our system with VPN, but 90% ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लाइव रहता है, इंटरनेट के एक्सेस के थ्रू हम आसानी से अपनी एक्सचेंज सर्वर की मेल को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत रेयर केस में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो उस केस में हमें वीपीएन की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज नो नीड टू इंप्लीमेंट वीपीएन। क्लियर? Yes. अगर कोई अपडेट है सर्वर पे तो हमें like the entire system was down, right? Would go down. Exactly, lots of issue, means in case of exchange server we face lots of issues। मेल नहीं आ रही, मेल नहीं सेंड हो रही, अटैचमेंट नहीं जा रहा, एंड नंबर ऑफ इश्यूज इन exchange server। And the important part is really difficult to manage and monitor our exchange server। एक कॉस्ट आप हार्डवेयर का दे रहे हैं, राइट? You must need to pay for monitor, you must need to pay for the troubleshooting। Is it clear? Mhm. Mhm. Think about the Office 365, it's just a portal, it's just a portal,
No need to purchase any kind of hardware resource. No need to buy any kind of high configuration based machine. ठीक है? We just need to connect with internet और आपको एक license purchase करना है. Just need to purchase a license. License cost is started from 269 to 5000 per month. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा लाइसेंस यूज करना चाहते हैं. No need to use any hardware. And Exchange server, if you plan to host your mailing services through Exchange server, it will take up to entire day, 6 to 8 hours to set up your mail server. इससे ज्यादा लग सकता है. If you are expert, then 6 से 8 घंटे का टाइम लगेगा. But if we talk about Office 365, in case of Office 365, I think within 15 minutes आपकी मेल जो है वो मूव हो जाएगी वर्ल्ड वाइड. Is it clear? Yeah. The licensing cost that you said, like 269 to 5000, is it per resource, per license? Yes. Actually, per resource, not in per resource, is a license for our mailing services. Okay. Okay. Like mailbox, Teams, Exchange, mailboxes, Teams, and what we can say that OneDrive. Matlab, there are like 1,000 employees times 1,000, is it? Mhm. Okay. So in single license, they give us up to 20 different licenses. एक लाइसेंस पे हमें 25 यूजर मिल गए, 10 यूजर मिल गए, 5 यूजर मिल गए, ऐसे मिलते हैं. अच्छा अच्छा, है ना? tier वो होता प्लान है. के ऊपर. And in this case, what we need to do, we are not responsible for hardware. We don't care कि backend में हार्डवेयर में क्या लगा है. मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और ट्रबल शूटिंग की रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा नहीं पड़ती जितना हमारे ऑफलाइन सर्वर में या एक्सचेंज सर्वर में चीजें होती हैं. Is it clear? Yeah. So this is all about IAS, PAS, and SAS. Please take 2 minute time and go through the topics that we completed. Let me know if you have any question. So software as a services can also be like using any of the industry tools, right? For example, WebLogic, right? So instead Correct. of me buying a WebLogic license, installing it on my machine, configuring it, maintaining it, I can use a service which is available and use it whenever I want and kind of just, just pay based on my demand and then and take it out, right? Correct. Okay. And we talked about like IAS as manageable, PAS pass as unmanageable, and what about SAS? Is how do we term it? So in Manageable case or of SAS is basically a combination of infrastructure and platform as a services both. Means you can say that 50% for user end and 50% which is managed by the provider. okay? It cannot give you the complete platform. It cannot give Correct. you any kind of. It cannot give us any a complete infrastructure related services. Just 50-50. Correct. Or one more thing is like if we have a custom software that is being made by the company, right? I mean, they make a lot of companies make a lot of applications. We Correct. can also put that as a, I mean, like we can also install that. That'll be part of our software as a service, or no, not even software, right? It will be No, no, platform. no. No, only infra and platform can support to put your own services. अगर आप अपने कोई Correct. सर्विस या Got एप्लीकेशन it. रखना चाहते हैं. Got That's it. why it's a 50-50% ना. ये जो Correct. है उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपनी तरफ से हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे. कोई नया एप्लीकेशन या कोई नया सर्विस अपनी तरफ से हम ऐड नहीं कर पाएंगे. Huh, huh, Mm. huh. Clear? So, Got it. for example, if I'm using Informatica on AWS, is that also considered as platform on service or that will be considered as SaaS? See, actually, if we talk about our cloud providers, तो चाहे Amazon की बात करें या Azure की बात करें या Google Cloud की बात करें, they contain up to 3,500 services plus more than 3,500 services. ठीक है ना? Mm. So it means that on the single portal you are able to find all types of services. Right.
मतलब ये कि AWS पोर्टल जो है हमारा ना, विच इज कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज भी ऑप्शन देता है. इट Mm-hmm. गिव अस ऑप्शन टू मैनेज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड services, and it can also provide an option to create our resources based on platform as a services. A single portal responsible to provide or carry the all types of services, Mm. infra, platform, and software. Mm. ठीक है. एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर्किटेक्ट के केस में हम देखेंगे कि कौन सी सर्विसेज हमारी इंफ्रा में काउंट होंगी, कौन सी प्लेटफॉर्म में, और कौन सी आपके सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज. तो वी नीड टू सेग्रीगेट. Right. क्लियर? Right. Yeah. Any doubt, any question, please let me know. Nathan, that's what I was asking. If there is an Informatica service available on the cloud, if I'm using that, is that considered as SaaS in that case? Correct. Okay. Like we are able to configure and set up our mailing services through Amazon Web Services, so which consider as a software as a services, Mm. क्योंकि उसमें हम कोई भी हार्डवेयर नहीं लगाएंगे. Right. प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, वी जस्ट नीड टू परचेज एंड पे एज पर द मेल बॉक्सेस. कितने नंबर ऑफ यूजर आपको चाहिए उतना आप पे करेंगे एंड यू आर एबल टू यूज द मेलिंग सर्विसेज. क्लियर? Yes. So what is a platform as a service and software service? I'm getting a little bit confused. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. Is ओके. how do you really differentiate between a PaaS and a SaaS? Like अभी जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इंफॉर्मेटिका की सर्विस यूज कर रहा हूँ, so why is that not considered as a PaaS and is considered as a SaaS? You're talking about Office 365. Let's say Office 365, okay? If I'm using an Office 365 key mailing service, right? For example, why is it why is it considered as SaaS and not considered as platform as a service? See, we have a best example because what happened in this case, whenever we proceed with platform as a services, so you must need to select a platform. आप अपने तरफ से प्लेटफॉर्म को डिसाइड कर रहे हो. Platform in the sense you are planning to host a .NET site, okay? So Mm-hmm. it gives us an option. Do you want to host on Windows? Do you want to host on Linux? या फिर आप Mac पे इसको host करना चाहते हैं? First, it gives us an option. You Mm-hmm. have Okay. these types of platforms that you can select, maybe .NET, PHP, Java, right, Python, or any. So ये हमें selection करने का option दे रहा है ना. Got you. It gives us a Got proper you. option to select the platform. Okay. SAS cannot give you any option. Just I have as a you'll have to use it. You are Just subscriber consume, of subscribing and consuming it basically. Right. Okay. 269. अगर आपने नेटफ्लिक्स को मोबाइल डिवाइस के लिए सब्सक्राइब किया है, मींस 150 पे आपने नेटफ्लिक्स का यूज किया है, तो यू आर एबल टू यूज ऑन योर मोबाइल फोन, नॉट ऑन योर स्मार्ट टीवी. Mm-hmm. Entire OTT platform considered as a software as a services. True. We have to pay the subscription payment. Subscription. हमें सब्सक्रिप्शन का पेमेंट देना है. Got it. करेक्ट. Okay. Whereas in platform as a service, we are basically taking the platform and building on top of it. And in infrastructure as a service, we are building everything from a scratch. करेक्ट. Okay. Any other question, any other doubt? No, it's pretty good. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. Yeah, yeah, Okay. ठीक है. So can we take a small break, just yeah. Mhm. 10-minute break and then continue again? Sure, sure. Sure. Okay, Go so on. we'll connect in next 10 minutes. Okay. This conference will now be recorded.
Now, another important part for cloud computing, as we decided कि हमें जो कंटेंट है या जो सर्विसेज हमें देखनी है वो AWS solution architect की देखनी है, right? Let's So check, as is Vinod, are you back? Because I can see he's on mute. I don't know if he's there. Vinod, can you hear us? Are you back? Oh, he's not back yet, I guess. oh, 1-2 मिनट रुक जाते हैं. Hey Manjit, I'm back. okay, yeah, thank you. Okay, so कोई क्वेश्चन पुराने वाले टॉपिक पे, मींस जो हमने बेसिक डिस्कस किया है? नहीं, I think you can move it. Yeah. So now let's talk about the AWS solution architect. Means let's talk about the AWS portal. Mhm. So as we know that a number of providers are available, जिसमें से Amazon या what we can say that Azure, Google Cloud, ये सभी जो है अपने पास means providers हैं available, and most of providers can provide us same services. अगर इनके services की बात करें तो ज़्यादातर providers के पास same ही services रहती है. They are just making a changes on daily basis. हर 10 दिन 15 दिन हफ्ते भर में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं. सो बेस से स्टार्ट करते हैं. हाउ वी कैन स्टार्ट वर्क विद Amazon वेब सर्विसेज. सो as we know that it's a cloud platform, so what we need to do, we need to create account. ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले Amazon aws.amazon.com. ठीक है, ये URL है जिसके ऊपर हम अपना साइन अप करेंगे, and we need to proceed and create a free trial account. AWS portal की बात करें तो yes, every cloud provider can give us option to configure our services, configure a free trial account.
सो इन केस ऑफ Amazon वेब सर्विसेज, इनका जो फ्री ट्रायल है थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं Azure के फ्री ट्रायल के बारे में, AWS के फ्री ट्रायल के बारे में और गूगल क्लाउड के फ्री ट्रायल के बारे में। वी शुड नो अबाउट द गैप कि इनमें क्या एक्चुअल में गैप रहता है। Azure हमें 30 डेज की वैलिडिटी के साथ $200 प्रोवाइड करता है। ये $200 हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू परचेज द सर्विसेज, और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 30 दिन के लिए। AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS पोर्टल की, Amazon पोर्टल की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल के लिए रहती है। कोई भी क्रेडिट अमाउंट नहीं मिलेगा, बट यू मस्ट नीड टू यूज लिमिटेड सर्विसेज। हर एक सर्विस का एक कोटा है, यू कैन से दैट, कि उससे ज्यादा सर्विसेज हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उस लिमिट्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या लिमिट्स होती हैं। गूगल क्लाउड की बात करें तो गूगल क्लाउड कैन गिव अस अ ऑप्शन एंड वैलिडिटी फॉर 90 डेज, और इसका जो मीन्स अमाउंट की बात करें तो ये हमें $300 पे करता है टू एक्सेस द सर्विसेज। इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्री ट्रायल, ठीक है, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मीन्स वर्क ऑफ फ्री ट्रायल। इज इट ओके? Yeah. Yes. One question, like, so in the AWS limited service, meaning like we will get all the services, but for a limited with some constraints, or like, is हाँ, it only certain services with? let me give you some examples, ठीक है। लिमिटेड का some examples हैं, कुछ examples हैं अपने पास। like as a 1 VM configuration of 1 gig of RAM, 1 core CPU plus 30 gig of hard drive। Okay. ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है T2 मैक्रो। इसका जो नाम है वो है T2 मैक्रो कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक और है. ये अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं ना तो आपको हर महीने 750 आवर्स मिलते हैं पर मंथ। इट मींस दैट अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन की वीएम क्रिएट की तो आई डोंट थिंक कि हमें कभी पेमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, या आप एक वीएम की जगह पे आपने कितने वीएम बना लिए, फॉर एग्जांपल आपने 3 वर्चुअल मशीन बना ली, आपने 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली सेम कॉन्फ़िगरेशन की, और जब आप 3 वर्चुअल मशीन तैयार करेंगे तो 1 घंटे वीएम ऑन करने का मतलब है आपका टोटल कंजप्शन कितना होगा? 3 आवर्स 3 का। घंटे मतलब 350 हो जाएगा, सॉरी 250 हो जाएगा, 250 आवर्स पर मंथ हो जाएगा। पर each VM per month, right? करेक्ट। टोटल 30 डेज में या 31 डेज की अगर हम बात करें तो जो आवर्स होते हैं वो 740 घंटे होते हैं। 740 आवर्स इन 30 डेज, हर महीने हमें 740 आवर्स मिलते हैं, राइट? बट यहाँ पे 750, और अगर आपने तीनों वर्चुअल मशीन्स को 10 दिन तक ऑन कर लिया तो कितना कंजप्शन हो जाएगा? 24 into 3, करेक्ट। right? Into 10। करेक्ट। सो इट मींस दैट ये 750 आवर्स जो है आपने कितने दिन के अंदर कंज्यूम कर लिया? जस्ट 10 डेज के अंदर। और उसके करेक्ट। बाद अगर आपने इंस्टेंस ऑन किया तो आपको पे करना पड़ेगा। तो मतलब एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि if when we are using this, like, 1 VM, 1 GB RAM, 1 core CPU and all those things, and if we are not using that service, will it automatically get unallocated, or I mean we have to manually drop it? अनअलोकेटेड अगर ऑटोमेटिक सेट करना चाहते हैं तो वी मस्ट नीड टू प्रोसीड विद ऑटो स्केलिंग सर्विसेज, ठीक है। कि अगर हाँ। यूज में नहीं है, यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ हो जाए तो ऑटो स्केलिंग लगाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपको मैनुअल बंद करना पड़ेगा, इंस्टेंस को स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ये या स्पेशली इन केस ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन, बिकॉज व्हाट हैपन इन केस ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन, मोस्टली क्या होता है कि हम पोर्टल पे सर्विस क्रिएट करके भूल गए और वो भी बैकएंड से चार्जेस करना स्टार्ट कर देगी। ओह, ओके ओके। तो मेक श्योर कि आप जब भी आपका प्रैक्टिकल खत्म हो, आप रिसोर्सेज को या तो स्टॉप कर दो या आप टर्न ऑफ कर दो, सिंपल सा। तो मतलब हम लोग जब एक नया फ्री अकाउंट शुरू कर रहे हैं तभी वी नीड टू गिव क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दोस इंफॉर्मेशन, इज इट? Yeah, yeah, रिक्वायर्ड। आई एम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी तो हम समझ लेते हैं फ्री ट्रायल की वैल्यू हाँ क्या हाँ है
and after ठीक that है we'll need to proceed and create a new free trial account, right? ठीक है Okay, so ये तो एग्जांपल हुआ. एज इट इज नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं अपने पास लिमिटेड के. जैसे S3 की स्टोरेज होता है जिसमें 5 GB का स्टोरेज आपको मिलेगा, नॉट मोर हाँ देन 5 GB. अगर आप इससे ज्यादा रखते हैं तो उसका चार्ज पड़ेगा, एंड इट्स अ वन टाइम 5 GB फॉर इंटायर ईयर, इंटायर 12 मंथ. ठीक है. हाँ हाँ बीपीसी आपको मिलते हैं, बीपीसी मिलते हैं आपको 20 बीपीसी आप बना सकते हैं, 20 बीपीसी आप तैयार कर सकते हैं लिमिट. और अगर सबनेट्स की बात करें तो सबनेट अप टू 200 सबनेट्स आप तैयार कर सकते हैं. सो इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे लिमिटेड के. डायरेक्टली हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करके समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी मस्ट नीड टू नो. क्लियर? Mm-hmm. yes so if we are having 20 VPC and 200 subnets that is like 800 odd different okay yeah I'm clear yeah ठीक है, नेक्स्ट बढ़ सकते हैं. Yeah. चलो अगला जो स्टेप है आपके पास, how to create how to sign up ourselves over our AWS portal. So it's really simple. Prerequisites की बात करें तो कुछ prerequisites हमें ध्यान में रखना है. Like as a, we must need to use mail ID, then contact number, which is really important, and third related to our credit card. ठीक है. And it will charge you in case of INR ₹2 का charge करेगा ये, and it will refund within 24 hours. Mm. And always try to proceed with free trial. Do not proceed with जब आप free account create करेंगे ना, it give us a two different option. How you can decide कि कौन सा free trial होगा, कौन सा paid होगा, कौन सा enterprise होगा. One is personal, दूसरा professional account. Personal in the sense जिसमें आप अपने testing के लिए यानी free trial. Professional which is enterprise. इस अकाउंट में आपको पे करना पड़ेगा. It cannot give you any kind of free trial services. Is it okay? Yep. Sure. Very basic step that we need to use to sign up ourselves over Amazon portal. तो Amazon पे अगर अपनी sites तैयार करनी है तो what we need to do, अगर अपना account create करना है तो let me create with the help of my Gmail account. aws.amazon.com, this is our URL, and it gives us option to create an account. Provide your mail ID. So in my case, I'm going to use Azure @gmail.com. okay You must need to use the same. You need to provide the account name. Verify your mail address. You must need to receive one kind of code on your Gmail account. So इस mail yeah ID पे हम check करते हैं code. चलिए यहाँ पे AWS का कोड हमें मिला है. We just need to open it, copy the code. Code valid are applicable for next 10 minutes only. Verify करेंगे.
प्रोवाइड योर रूट पासवर्ड। तो आप यहाँ पे रूट पासवर्ड दे दीजिए। Follow the step like your full name, AWS. You must need to provide your contact detail, which is mandatory. Select your location, means country code. Now, address, you can put any name. Continue. See, this one is the really important part. Business or personal, right? So business यानी जो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार करना चाहते हैं, which is type of enterprise. So we are planning for personal account क्योंकि हमें free trial account create करना है, right? True. And proceed. Now ये क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, हाँ अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि we are able to use our debit card as well to sign up ourselves, right? अभी आरबीआई ने या फिर जो इंडिया की बात करें तो क्योंकि पहले क्या था कि क्रेडिट कार्ड इसमें एप्लीकेबल था. Nowadays we are able to use our debit card to sign up ourselves on any cloud provider, not only with Amazon. Azure के पास भी जो क्लाउड सर्विसेज है उस Azure के पोर्टल पे भी हम अपना what we can say that डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, कोई क्वेश्चन कोई डाउट अभी यहाँ तक? No. One question, Manjit. Like, I think 1 or 2 years back, I created one account, and when I looked into that, I think this is all that free trial would have already expired, right? So I will Correct. create a new account. I can create a new Gmail account, and then if I give the same phone number, will it have a problem? No, right? अगर 1 साल पहले की बात है तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा. Okay. ठीक है ना, because you know that the validity of our means validity of our AWS portal account for 1 year. तो 1 साल के अंदर अगर हम सेम डिटेल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं कहीं पे तो वो पहले अपने डेटाबेस में वेरीफाई करेगा कि इस पर्टिकुलर डिटेल पे कोई फ्री ट्रायल अकाउंट पहले से यूज हो रहा है या किसी ने क्रिएट किया है तो वो रिजेक्ट कर देगा. अदरवाइज अगर आप 1 साल बाद यूज करते हैं तो इट विल अलाउ. ओके 1 साल के ऊपर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई लॉग्ड इनटू द अकाउंट. अभी वहां क्या बोल रहा है कि नो फ्री सर्विसेज अवेलेबल फॉर यू, वैसा कुछ तो दिखा रहा था. नो वो आपके जो वैलिडिटी है ना वो उसके अकॉर्डिंग यू आर एबल टू लॉग इन इट, बट जो आपकी वैलिडिटी थी ना वो वैलिडिटी एक्सपायर हो गई. काउंट इज स्टिल अवेलेबल, राइट? हाँ. बट आपको हर एक सर्विस का पे करना पड़ेगा उसमें. अच्छा, तो मतलब नया अकाउंट क्रिएट कर दूंगा. हाँ, फ्री ट्रायल के केस में आप नया अकाउंट तैयार करिए. ठीक है, so you must need to provide your information to proceed and create. So in my case I have already created my free trial account, so no need to create again. I'm just going to log in my Amazon portal and give you the complete information at least about that portal, and then discuss about the some important features or component of AWS portal. Clear? Yeah. So identification of Amazon
Web services means Amazon portal especially, or we need to understand about how they establish our resources, our data center in background, in backend. What was that? उसके पहले एक root user and there was something else, right? IAM user. IAM user and root user, yes. So we use always the root user to come in. See, what happened? We need to know about the gap between both, means IAM और root user के बीच में gap क्या है वो हमें देखना है. Think हाँ, about the gap between each other. वैसे ये सारा topic है अपने पास training में, but we need to know about. हम्म, For example, we are working with one of organization. Maybe we are working for IBM. ठीक है? हाँ, हाँ, Now you are working as a solution architect, associate engineer. ठीक है ना? आप ठीक है, single person है जो IBM के लिए Amazon की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं. यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टल एंड आपको जो एक्सेस मिला है रूट का मिला है, राइट? हाँ, आपको जो अकाउंट मिला है रूट का एक्सेस मिला है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ईच एंड एवरी सर्विसेज. स्टार्टिंग के 2-3 महीने 6 महीने तक आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को हैंडल किया. यू आर एबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. ठीक है, जितने भी टिकट्स आ रहे हैं, जितने भी रिक्वेस्ट आ रही है, यू आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग बिकॉज यू हैव अ वेरी लिमिटेड सर्विसेज. तो yeah, आसानी से आप मैनेज कर पा रहे हो. बट आफ्टर सम डेज लाइक एज आफ्टर 1 ईयर आपने डेटाबेस भी परचेज किया, आपने स्टोरेज भी परचेज किया, VPN भी परचेज किया, एन नंबर ऑफ सर्विसेज यू परचेज्ड, राइट, एज पर हाँ, द हाँ, क्लाइंट्स रिक्वेस्ट. एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग ऑन बाय सिंगल पर्सन, बाय सिंगल इंजीनियर. कितना डिफिकल्ट है इन सभी पोर्टल को, इन पोर्टल की सर्विसेज को यूज कर पाना, बिकॉज वी हैव ओनली 9 आवर्स शिफ्ट, राइट? हमारे पास correct. केवल 9 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट है, जिसमें से लंच ब्रेक वगैरह निकाल. यू आर गेटिंग एन नंबर ऑफ टिकट्स डेली बेसिस पे, 100 200 300 टिकट्स आपको मिल रही हैं. You know very well about, you are able to resolve the entire tickets, but unfortunately time नहीं है. Hmm, Clear? correct. तो what happen in this case? आप क्या करोगे? आप अपने जो भी मैनेजमेंट टीम है आप उनसे बोलोगे वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ टिकट. तो फीडबैक मेंटेन करने के लिए, मीन्स क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, you must need to hire few more engineers जिनको Okay. AWS की. Is it correct? हाँ, You are a right. root, you are admin of this particular portal, but आपने क्या किया? वर्क के अकॉर्डिंग, वर्कलोड के अकॉर्डिंग आपने कुछ और इंजीनियर्स को हायर किए. लाइक एज you hire one engineer with name of ABC, second engineer with name of XYZ, and third engineer that you had with name of test. ठीक है, ये तीनों इंजीनियर्स को आपने हायर किया. सो कभी भी कोई कंपनी इनके लिए सेपरेट अकाउंट नहीं तैयार करेगी. You are an architect, you are an admin, so your responsibility to create a user for these engineers. आप इनके लिए यूजर्स तैयार करेंगे कहाँ से? AWS पोर्टल से, रूट के थ्रू. हाँ, 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 समझ गया. Hmm. ठीक है, So और इनको root, हाँ. So root is basically like a super user, and the other सुपर other. Okay. रेस्ट आर अ काइंड ऑफ नॉर्मल यूजर जिसको आप डेलीगेट कर सकते हैं. हाँ, हाँ. इज इट ओके? Yes, yes. नेक्स्ट, सो इन दिस केस जो आपके इन ABC एम्प्लॉय, XYZ एम्प्लॉय और टेस्ट एम्प्लॉय के लिए जो यूजर्स बनेंगे, विच इज कंसीडर्ड एज ए IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यूजर, उनको आप डेलीगेट करेंगे विद डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस. आपने डिसाइड किया है कि AWS रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द वर्चुअल मशीन, मींस EC2 इंस्टेंस. IAM को हम स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, दे आर एबल टू एक्सेस द स्टोरेज, और जो टेस्ट यूजर है इसको हम नेटवर्क का पार्ट देंगे. So with the help of root account, we are able to share the responsibility to entire user. Okay. Clear?
Yes. Now, let me show you the portal. This is our portal, AWS portal. Look like. I'm just going to click on this particular icon. It gives you the complete information about the resources. Every cloud provider established purchase a contain a number of resources, like as up to 3,500, more than 3,500 services. We have a compute, management, governance, security, compliance, container, storage, media services, databases, migration, transfer, AWS cost management, AR, VR, application integration, business application, networking, developer tool. These all are the services or tools are available over the AWS portal. Clear? And these resources or services are categorized in up to 12 different certification. मतलब ये सर्विसेज को 12 से 13 डिफरेंट सर्टिफिकेशन में डिवाइड किया गया है. AWS Solution Architect Associate, Practitioner, AWS SysOp Admin, AWS Professional, AWS Security Expert, Database Engineer, DevOps. ठीक है, n number of certifications are available. हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक प्रोफाइल के लिए इन्होंने सर्टिफिकेशन को डिजाइन किया. इज इट ओके? ठीक है. सो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्ट लेवल ऑफ कंटेंट. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आर्किटेक्ट लेवल के कंटेंट को क्लियर करना. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट the basic services of our AWS. Basic services in the sense I'm talking about means how they establish our services in different locations. कि इन्होंने जो अपना डेटा सेंटर है कैसे इस्टेब्लिश कर रखा है, कैसे ये हर एक SLA में आपको श्योरिटी देते हैं कि आई एम गिविंग यू 99.95% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, कैसे श्योरिटी देते हैं कि यू हैव अ फेल ओवर, यू हैव अ डिजास्टर रिकवरी, जिनके हेल्प से आप अपने FT की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं. जो 95.99% था वो 99.99% कैसे आप इंक्रीज कर पाएंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी. Few important components for our AWS, not only the AWS, for every cloud providers. AWS data centers. So they establish our data center in various geographical locations like this. These are the data centers. ये सभी डेटा सेंटर AWS ने establish कर रखे हैं in different geographical locations. Let me show you. तो आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ AWS पोर्टल के केस में वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन जिसमें हमें एक मुंबई लोकेशन दिखाई पड़ रहा है. इफ यू क्लिक किया, नॉर्थ वर्जीनिया, कैलिफोर्निया, केप टाउन, हांगकांग, है ना, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस दिखाई पड़ रहे हैं. इज इट करेक्ट? Yes. Okay, so think about it. They categorize our services and data center in two different parts. और पहला है regions और दूसरा है zones, available zones. Availability zones. Think about the gap between region and zones. Any idea about the gap between region and zone? Anyone want to add something? Maybe a zone is within a region. Zone is in the region. Sure. Anything Region, else? the region would be more maybe a geographical location like North America or something, and then within that region, it's again you have availability zones. जो डेटा सेंटर है वो रीजन में है या जोन में है? जो फिजिकल डेटा सेंटर है Zone.
एग्जैक्टली। तो ऐसा बोल सकते हैं कि रीजन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जोन। Yeah, Yes. yeah. रीजन इज अ पर्टिकुलर एरिया कि ठीक है, हमने इंडिया लोकेशन की बात की, राइट? इंडिया Hmm. लोकेशन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, दिल्ली Exactly. है, यूपी है, एमपी है, काइंड ऑफ, राइट? सो Yeah. दीज ऑल आर कंसीडर एज द जोन्स। ये सभी जोन की तरह कंसीडर किए जाएंगे, और जो रीजन है वो हमारा इंडिया कहलाएगा, करेक्ट? True. कूल। नाउ थिंक अबाउट इट। The entire zones basically are connected to each other. Mm-hmm. ये सभी आपस में कनेक्टेड है थ्रू, यू कैन से दैट, प्राइवेट नेटवर्क। इनका जो पर्सनल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू इन्होंने सभी डेटा सेंटर को कनेक्ट कर रखा है। Got it. क्वेश्चन इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए यहाँ पे गैप बिटवीन रीजन एंड जोन्स। सो एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, राइट? एक Yeah. दो तीन चार पाँच छः सात आठ, राइट? एशिया Yeah. पैसिफिक जो है विच इज कंसिडर एज ए रीजन। हांगकांग की बात करें, मुंबई की बात करें, सिंगापुर की बात करें, सिडनी की बात करें, टोक्यो की बात करें, तो ये जो ब्रैकेट में है ना, दीज ऑल आर द जोन्स। Zone. और राइट तो साइड पे जो AP हाइफन साउथ हाइफन वन वो क्या होता है? दैट्स अनदर ग्रुपिंग इज इट? दीज ऑल आर द अवेलेबल जोन्स। अवेलेबल zones. ओके, ठीक है। बिकॉज व्हाट तो हैपेंड ना, मुंबई मुंबई के अंदर जितना zones अवेलेबल है वो दिखा रहा है उधर। एग्जैक्टली। अब जैसे एपी साउथ वन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ। जब आप मुंबई जोन में है करंटली, दिस वन इज अवर जोन, मुंबई जोन में है, रीजन हमारा एशिया पैसिफिक है। वी आर अनेबल टू फाइंड द रीजन, ठीक है? ये हमें जोन के बारे में बताएगा। बट वेन एवर वी प्रोसीड एंड क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन या कोई भी सर्विस जब आप परचेज करेंगे ना, दिस इज योर करंट जोन। और इसके अंदर जो मल्टीपल जोन्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, लेट मी शो यू। एक इंस्टेंस को प्रोसीड करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एन इंस्टेंस, ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द गैप बिटवीन रीजन जोन्स एंड जो अवेलेबिलिटी ऑप्शंस है। यहाँ पे हमने जानबूझ करके ओल्ड वाला पोर्टल स्विच कर दिया है, बिकॉज वी जस्ट नीड टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट जोन्स। कोई भी प्रोसीड कर लेते हैं, वी डोंट वांट टू क्रिएट। नाउ थिंक अबाउट इट। आवर करंट लोकेशन इज मुंबई, राइट? हाँ। Let me show you how many zones you are able to find. 3. 3 3। AP South 1B, AP South 1C, AP South 1A. Is it correct? Mm-hmm. करेक्ट। Because what happened? Uh, Let me explain you again. AP is the Asia Pacific, which is our, I think, Region. 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 ये तो हमारा region हो गया ना? हाँ। And it give us a zone. It give us a zones जिसमें से हमने एक डिसाइड किया है कि ठीक है, चलो हम अपने रिसोर्सेज को मुंबई में बना लेते हैं, Mm. ठीक है? मुंबई लोकेशन हमने सेलेक्ट किया, and in the Mumbai location they establish a 3 different data centers। जो एक्चुअल अवेलेबिलिटी जोन कहलाता है ना, वो हमारा डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर Mm-hmm. 1, डेटा सेंटर 2, डेटा सेंटर 3। और इसको इन्होंने आइडेंटिफाई कैसे किया है? कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बता रखी इनको कि दिल्ली में है, एक पुणे में है, लाइक दैट। although they establish a data center in physical location, ठीक है? बट इन्होंने नाम क्या दे रखा है? AP South 1 something like that. Right? Exactly, AP South 1B, AP South something, right? AP ये हमारा एशिया पैसिफिक हो गया। साउथ इज अ लोकेशन 1A, AP South 1B and 1C। So this is the actual data center जिन्होंने जिसमें इन्होंने अपना पूरा का पूरा फिजिकल सेटअप लगा रखा है।
नेटवर्क, स्टोरेज, नंबर ऑफ होस्ट, हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीनें, ठीक है ना, 24/7 इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट, पावर सप्लाई, मल्टीपल एम्प्लॉयज जो हमारी सर्विसेज को पोर्टल की मैनेज करते हैं बैकएंड। इज इट क्लियर? Yes. So now द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपल जोन्स, बेनिफिट्स की बात करें, जो मल्टीपल जोन्स हैं आपस में कनेक्टेड, इनका बेनिफिट्स की बात करें, इन्हीं के बिहाफ पे एज्योर या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हमें फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। तो बाय डिफॉल्ट अभी जो हमारा फॉल्ट टॉलरेंस वो कितना है, 95.99%। ये हमें 95.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? 95% is on the region or the zones? Region, right? एनी सर्विस, नो, एनी सर्विसेज दैट यू परचेज्ड, Any service. Okay, okay, okay. कोई भी सर्विस जो आपने परचेज कर रखी है Mm-hmm. उस पे ये सिक्योरिटी देते हैं 95.99%। तो मतलब क्या सिनेरियो है कि मतलब इट विल फेल, मतलब कुछ एग्जाम्पल है क्या? मतलब देखो, हाँ फेलियर का जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, वो होता है डिजास्टर डिजास्टर का, नेचुरल डिजास्टर का। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, डेटा ओके। सेंटर बर्न हो गया, ठीक है, हाँ डेटा सेंटर बर्न हो गया, अर्थ क्यों आ गया, या फिर और कोई इशू आ गए, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उस केस में ये क्लियरली तरीके से मेंशन कर रखे हैं अपने एसएलए में कि अगर ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है तो सॉरी, आई एम अनएबल टू सर्व योर सर्विसेज। क्लियर? ओके। अगर आपको उससे बचना है तो आप अपनी सर्विस में डीआर लगाइए, Got it. और वो पेड सर्विस है, उसका पेमेंट आपको अलग से देना पड़ेगा। ओके। इज इट क्लियर? Yeah. यस, वेरी क्लियर। So DR is not by default. DR आपको लेना पड़ेगा अलग से. इट्स अ पेड सर्विस, यू मस्ट नीड टू परचेज, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ेगा लोकेशन कौन सी रखनी है, सेकेंडरी लोकेशन। Oh, okay. Okay. 95.99% तो ये अपनी तरफ से दे रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस पे आपको जो फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है वो आपके हार्डवेयर के ऊपर डिसाइड होता है, और जिस कभी भी ऑन प्रोमाइसेस के फॉल्ट टॉलरेंस को हम 50% ही मानते हैं, 50% कैजुअलिटी मानते हैं। And you can select the region and the availability zone when you're setting up those services. या वो by default AWS gives it. No, you are owner of this particular portal, so definitely we are able to select the Select. services। Got it. हम Because डिसाइड then, करेंगे। हाँ, because based on that मेरा latency वगैरह भी impact होगा, right? डेफिनेटली इफ यू प्लान Let's टू say if I होस्ट have my let's say if I have maximum users in India, definitely I would like to select the region availability zone there rather than to keep it somewhere away. डेफिनेटली, Yeah. अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। मींस अगर आप यूएस में शिफ्ट किए हैं और आपके कस्टमर्स जो इंडिया लोकेशन में है, तो कहीं Yeah. ना कहीं लेटेंसी तो आएगी। Yeah, and also depends अगर मेरे और भी applications हैं जिससे interaction होता है, and if those are hosted in some region, I would like, if I'm hosting a new application, also to be somewhere closer to that or might be the same region. करेक्ट 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 करेक्ट। Okay. And can I also select multiple regions? I can do that also, right? और मल्टीपल सर्विसेज, राइट, यू आर टॉकिंग। हाँ. Yeah, multiple services, multiple regions. Because समझिए कि मतलब I have onshore and offshore, और करेक्ट, दोनों जगह, है ना? वी आर एबल टू डू दैट, यस वी कैन। Okay, okay, okay. नाउ थिंक अबाउट द फॉल्ट टॉलरेंस। एक्चुअल में फॉल्ट टॉलरेंस है क्या और किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है? तो Hmm. दे गिव अस द 95.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। इसकी क्लियर मीनिंग ये हुई कि अगर आप कोई सर्विस परचेज करते हैं ना, ठीक है, तो which is I'll try to give you 95.99% means 1000 days में एक 1000 days by 1 day जो डाउन टाइम है आपका, वो 1000 दिन में हो सकता है एक दिन आपका डाउन टाइम जाए, which is the meaning of 95.99%।
बट अगर आप मैनुअली इस फॉल्ट टॉलरेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजास्टर रिकवरी एंड फेल ओवर, तो आप कहाँ तक ले जा सकते हैं? 99.99% से लेकर के 99.9999% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, बट यू मस्ट नीड टू पे अमाउंट फॉर DR या फिर फेल ओवर। क्लियर? Okay. Yeah. अगर so एक क्वेश्चन है मंजीत, I mean, like, you know, if I am having all my services and application running in, let's say, one region in Mumbai, ठीक है, अच्छा, or Asia Pacific, yeah, wherever it is, or tomorrow if I decide to change the region, वो भी कर सकता है क्या? अपने ऊपर डिपेंड करता है। यस वी कैन। I mean, it's extreme case, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब instead of Asia Pacific I want to put it in Australia, वो कर सकता हूँ, all the application will seamlessly shift across to that new region. करेक्ट, वी कैन डू दैट। Okay. डन। एनी अदर क्वेश्चंस? और ये लोग डिसास्टर रिकवरी कैसे करते हैं? मतलब they have it in multiple regions? while creating the disaster recovery, जब आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, you proceeded and create your resource, एक अपने सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है मे बी इन लोकेशन ऑफ मुंबई। हाँ, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, दिस इज आवर ऐप सर्वर मे बी, okay. एंड यू वांट टू क्रिएट अ डिजास्टर रिकवरी फॉर दिस मशीन। ठीक है, आपने डिजास्टर रिकवरी तैयार करना है इस मशीन के लिए, और सेकेंड लोकेशन आपने डिसाइड किया आई वांट टू पुट इट इनटू द यूएसए। Okay. क्लियर? So you must need to decide the secondary location. This one is our primary, हाँ, और ये आपका secondary location होगा। Mhm. तो यूएस तो हमने एक डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया, यू हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट एनीवेयर, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। बेनिफिट इसका क्या होगा कि जब भी कोई आप इसमें चेंजेस करेंगे ना, जब भी आप कोई एप्लीकेशन चेंजेस करेंगे, इट विल क्रिएट अ लाइव एप्लीकेशन। oh, okay. क्लियर ना? हाँ, मीन एक एक सेकेंड की इंफॉर्मेशन आपकी कॉपी होती रहेगी। Okay. नाउ थिंक अबाउट, यहाँ पे कुछ नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से ये आपका डेटा सेंटर ही डाउन हो गया। क्लियर ना? तो जाहिर सी बात है कस्टमर हमारे सफर कर जाएंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप डायरेक्टली इमीडिएट यहाँ से इस मशीन को एक्सेस दे देंगे, और जो आपके कस्टमर्स हैं वो अगेन दे आर एबल टू यूज द सर्विसेज। Okay, got it. तो but हम when लोग I डिसास्टर रिकवरी के लिए इसलिए पैसा देते हैं बिकॉज इट्स वी आर फिजिकली गिविंग वन मोर सर्वर इन अ डिफरेंट लोकेशन. बिल्कुल 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 बिल्कुल, दे फिक्स द स्पेस फॉर योर सर्वर इन डिफरेंट करेक्ट. जियोग्राफिकल लोकेशन। दूसरी लोकेशन में आपके सेटअप के लिए इन्होंने सर्वर बना के रख दिया गया है। can I pick and choose of which application or service I want to or do not want to do a live replication to the DR? यू वांट टू कॉन्फ़िगर मैनुअल बैकअप काइंड ऑफ थिंग। नहीं, कभी कभी मतलब क्या होता है कि कंपनीज बोलती कि वो आई डोंट वांट टू पुट दिस इन डीआर बिकॉज दिस इज नॉट वेरी बिजनेस क्रिटिकल, राइट? हाँ हाँ हाँ, अगर ये मेरे को डीआर में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, करेक्ट। ये मेरे को सिर्फ खाली प्राइमरी में चाहिए, प्राइमरी डाउन हो गया तो ऐसा कुछ मेरे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, दैट्स फाइन बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी पेइंग फॉर इट, राइट? तो आप वैसे चूज कर सकते हैं कि नहीं भाई मेरे को इसका कोई रेप्लिकेशन नहीं करना डीआर में, आई डोंट वांट टू टेक दिस टू डीआर। ओके, सो इन दिस केस जहाँ पे मतलब अगर हमारा सर्वर एक दो घंटे के लिए, ये एक दो दिन के लिए डाउन भी हो जाता है तब भी कोई इशू नहीं होता, तो उस केस में हमें डेटा प्रोटेक्शन के लिए बैकअप का इस्तेमाल करना होता है।
हाँ बैकअप इज फाइन, पर मेरे को वो डीआर में नहीं रखना वो सिस्टम। मान लो मेरा एक एप्लीकेशन ही है, ठीक है, हाँ, और वो मेरा कुछ, इट्स नॉट अ वेरी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन, मेरे को उसके ऊपर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, तो मेरे को उसको डीआर में नहीं रखना, वो प्राइमरी ठीक में है। मेरा है, मेरा दैट इज फाइन। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। Exactly, we just want to ओके। create a backup for the same server. I don't want to create a DR, because what हाँ। happen in case of DR ना, वो लाइव रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका चार्जेस थोड़ा ज्यादा जाएगा। यस एग्जैक्टली। और बैकअप के केस में आपने वीकली सेलेक्ट कर लिया क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, डिपेंडेंसी उसके ऊपर ज्यादा है नहीं, तो आपने वीकली सेलेक्ट कर लिया। और दूसरी वीक में बैकअप डेटा होने के बाद आपने पुराने वीक का डेटा जो है रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। And what about capacity, like in terms of storage and everything? Is your DR the same as the primary, or it is a bit scaled down? सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट अगेन? जैसे अभी स्टोरेज वगैरह है, राइट? तो हम्म। आपका जो डीआर में जो स्टोरेज रहेगा वो सेम रहेगा आपका प्राइमरी जितना, या इट विल बी अ लिटिल बिट स्केल डाउन? बिकॉज No, no, आर no. वी गोइंग टू यूज द सेम resources, everything the same in DR? एग्जैक्टली। Mm-hmm. बट अगर डेटा के केस में बात करते हैं तो आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 5 GB का डेटा जो है हम्म। प्राइमरी लोकेशन पे रखा है तो क्या पांच हम्म। जीबी का डेटा सेकेंडरी लोकेशन पे बनेगा? दिस इज योर हम्म। क्वेश्चन। हाँ। उस केस में आपका डेटा का जो फॉर्मेट रहेगा सेपरेट रहेगा, बिकॉज ओके। इट्स रियली डिफिकल्ट कि अगर आप उतना पेमेंट यहाँ दे रहे हैं दूसरा पेमेंट एग्जैक्टली, वहां, हाँ। हाँ। तो काफी ज्यादा ये वो होगा ना। रिसोर्सेज भी ना, फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप यहाँ पे 8 GB मेमोरी यूज कर रहे हो, तो शायद वहां पे आप 4 की मेमोरी यूज करो, राइट? बिकॉज आप, दैट इज नॉट आपका योर जो प्राइमरी। सिस्टम, यस, आपका जो सिस्टम रहेगा, हम्म। आपका जो सिस्टम होगा वो स्टैंड बाय में रहेगा सेकेंडरी लोकेशन में। राइट। स्टैंड बाय इन द सेंस कोई सीपीयू यूसेज, कोई रैम यूसेज उतना है नहीं। जब आप उसको एग्जैक्टली। पिक्चर में लाएंगे, पिक्चर इन द सेंस कि जब आप उसको लाइव लाएंगे, तो हाँ। उस केस में आपका जो रैम और सीपीयू का ऑप्टिमाइजेशन। गॉट इट। ओके। या जब तक वो अपना सेकेंडरी मोड में है, उसको एक मिनिमल रिसोर्सेज पे आप रन कर सकते हैं, एंड व्हेन इट बिकम्स लाइव फॉर एनी रीजन, that is the time when you can also optimize it, or you can increase the resources, and that is one very good advantage of having it on the cloud, right? अगर आपको physically करना होगा तो you will take days, but here you हाँ can do it बिल्कुल। in minutes. Okay. क्लियर। Yeah, I'm clear. ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजास्टर रिकवरी एंड फेल ओवर। इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे, मीन्स कैसे इसको यूज किया जाता है, किस तरीके से सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक ईटीसी सारी चीजें हम यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने के लिए। अभी तक के लिए कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, आई मीन दिस इज गुड। और जो लाइव replication and all those things, it is some service of AWS that does that, right? मोस्ट ऑफ सर्विसेज मीन्स जो भी डिपेंडेंसी वाली सर्विसेज है, स्टोरेज हो गया, बैकअप हो गया, डेटाबेस हो गया, वर्चुअल मशीन हो गई, ये सभी हमें डिजास्टर रिकवरी का ऑप्शन देते हैं। अच्छा, ओके। जिनके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है डेफिनेटली वो हमें ऑप्शन देंगे टू कॉन्फ़िगर द डीआर। और नोटिफिकेशन सर्विस भी इसके अंदर होगा ना, मतलब जैसे ये प्राइमरी डाउन हो गया वैसे नोटिफिकेशन मॉनिटरिंग पे आ जाता है ना? वी हैव एसएनएस सर्विस, वी हैव हाँ, एसएनएस सर्विस which is applicable for all types of notification। ओके। मतलब आपने सिंपल। एक वीएम तैयार किया, एक इंस्टेंस तैयार किया और इसका सीपीयू कंजप्शन 75% गया, तब भी ये हमें मैसेज करके बता देगा फोन पे या मेल करके बता देगा। ओके ओके एसएनएस इज रियली इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ Amazon ओके ओके। that can help us to notify us कि हाँ ये सिचुएशन है आपके रिसोर्स की, मेक श्योर कि सब कुछ सही है ना? Hmm. अगर या, कहीं इशू है, नीड टू चेक एंड वेरीफाई कि आपको क्या चेंजेस करना है इसको फिर से मेंटेन करना। ओके ओके, वेरी क्लियर। Okay, cool. Let me show you some important services of Amazon because we just need to identify the portal, और इसी पोर्टल पे हमें सारी सर्विसेज मैनेज करनी है, तो डेफिनेटली we must need to know about each and everything।
Okay, in our dashboard, you can say that it's a kind of dashboard, right? ये अपने पास Amazon का dashboard है. Mm-hmm. This is search box. आप कोई सी भी सर्विस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. You can say that is spotlight. ठीक है ना? Right. ये हमारा क्या है? Spotlight, kind of spotlight. Okay. Hello, can you hear me? Yeah. Yeah, Yes. yeah, we can hear you, but we're just seeing the desktop now. Okay. Give me 1 minute, guys, please. Sure, sure. Hello, can you hear me? Yes. Yes, yes, Manjit. ठीक है, अब ठीक है, ठीक ठीक है? है. हाँ, हाँ, wait, ठीक है, sorry. Okay, okay. तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग अभी? Yeah, we were seeing the spotlight search. Okay, spotlight, ठीक है. विंडोज के केस में Cortana, मैक के केस में spotlight, right? Okay. तो what we need to do, जो भी सर्विस आपको 1 minute please. Yeah, yeah. Hello, Vinod, can you hear Mm-hmm. me? Yes. Yes, Yeah. yes. Sorry. No problem. ठीक है. This is the search panel जहाँ पे आप जो भी सर्विस हमें S3 क्रिएट करनी है. Just need to type S3.
It will guide you about the entire services with name of S3 bucket, glacier या जो भी services होती है. Route 53 हमें create करना है. You need to type. ये आपको redirect करेगा Route 53. तो आप इसको बोल सकते हैं it's a kind of search box, है ना, जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं जो भी सर्विस हम परचेज करना चाहते हैं. Is it okay? Yep. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस पोर्टल का, सभी ने चेंजेस किए हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया, आज की डेट में सबने अपने इस सर्विस को अप्लाई कर लिया, विच इज कंसीडर एज ए क्लाउड सेल. आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, पिक्चर स्मॉल आइकन क्लाउड सेल के नाम से, राइट. तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं ताकि आप ना टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओ क्लाउड सेल को यूज करने के लिए. About AWS portal, Amazon ने AWS पोर्टल स्पेशली क्लाउड के लिए इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में मई 2012 में, ठीक है. 2012 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको. इज इट ओके? टू जून 2016 ये आपका क्लासिक पोर्टल कहलाता था. इज इट ओके? फ्रॉम जून 2016 टू टिल डेट ये आपका री इन्वेंटेड पोर्टल कहलाता है. Okay. सो इट मीन्स दैट हम लोग अभी कहाँ पे हैं? हम लोग लेटेस्ट पोर्टल पे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पोर्टल इन्होंने कितने डिजाइन किए? 2. ये आपका ओल्ड था, ये आपका न्यू है. क्लियर? नीड टू नो अबाउट द गैप बिटवीन ईच अदर. ये आपका फुल्ली ऑटोमेशन सपोर्ट है. व्हाट इज ऑटोमेशन? CI/CD kind of thing. CI/CD, DevOps. CI/CD is just a way, just a component of automation. Basically, your DevOps pipeline is completely automated. I think. See, automation in the sense जैसे आप स्क्रिप्ट डिजाइन करते हैं ना, टेम्पलेट बनाते हैं आप. हाँ. एक ही टास्क को करना है GUI के थ्रू, एक ही टास्क को करना है CLI के थ्रू. तो ये जो आपका CLI वाला स्टेप रहता है जिसमें आपने स्क्रिप्ट बना के रख दिया, जब भी आपने शेड्यूल किया वो चल गया, राइट. तो उस केस में क्या होगा, विच इज कंसीडर्ड एज ऑटोमेशन. आपने ट्यूसडे को कुछ लॉन्च करना है, ठीक है ना, संडे को शाम को सेट करके छोड़ दिया. अब आप हेडेक फ्री, टेंशन फ्री हैं कि हमें ट्यूसडे को कोई काम करना है. ट्यूसडे वाला काम आपने संडे को कर लिया. गॉट इट? तो ये पोर्टल आपका पूरी तरीके से ऑटोमेशन सपोर्ट है. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द ऑटोमेशन सपोर्ट है? बिकॉज इट गिव अस ऑप्शन ऑफ क्लाउड सेल. और द क्लाउड सेल इज आल्सो कंटेन 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स. ये क्लाउड सेल क्या करता है आपको? बैश कमांड. Have you heard about bash? No. And PowerShell. PowerShell. क्लाउड सेल बैश की कमांड और PowerShell की कमांड दोनों की को इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है. बैश मीन्स अगर आपके पास मैक है, लिनक्स है, रेड हैट का कोई प्रोडक्ट, लिनक्स का कोई प्रोडक्ट, उबंटू हो, बैकट्रैक हो, काली हो, कुछ भी हो, ये आपका बैश टर्मिनल देता है. और जो PowerShell है विच इज माइक्रोसॉफ्ट. क्लियर? Yes. So with the help of cloud shell we are able to implement the services through command line interface. आप कमांड के जरिए ना कोई भी सर्विस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं.
कोई भी रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ आवर क्लाउड सेल. इज इट फाइन? Yes. आप देखिए यहाँ पे ये कमांड लाइन इंटरफेस बन के आ गया. एक्सेल में देखिए मल्टीपल ऑप्शन है. टैबलेट नया टैब ओपन कर सकते हैं 2 अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. मल्टीपल सर्विसेज यू कैन मैनेज इट. तो वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग क्लाउड सेल के बारे में, कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे कमांड आप यूज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन या स्टोरेज. So Cloud Cell is one of important tool that give us option to manage the services through CLI, through automation. That So you can use of the portal as well as Cloud Shell to basically manage your services. exactly, yes. But is there any preference कि ये करना हो तो आप Cloud Shell यूज करें और ये करना हो तो पोर्टल, या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बेसिकली डिपेंड करता है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो. एग्जैक्टली. और ये कंपैटिबिलिटी कब आती है? जब अपने पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो. But what is the whole idea or purpose they providing Cloud Shell when there is available on portal? Actually, the usage of our Cloud Cell, you can say that it will save the time. अच्छा, okay. मतलब जो इंस्टेंस बनाने में हमें, जो इंस्टेंस हमें क्रिएट करने में 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, वही इंस्टेंस 30 सेकंड हमें क्रिएट कर देते हैं. Okay. एक वर्चुअल मशीन की स्टोरेज बनाने में हमें 5 से 7 मिनट लग रहे हैं जीयूआई के थ्रू. वो सेम इंस्टेंस हम विद इन सेकंड 30 सेकंड टू 40 सेकंड हम उसको क्रिएट कर दे रहे हैं. Got it. क्लियर? Okay. नाउ अनदर ऑप्शन इज नोटिफिकेशन. अगर आपने कोई टिकट रेज की है रिलेटेड टू द बिलिंग या कोई सर्विस में प्रॉब्लम हो रही है यूज करने में, जो कन्वर्सेशन होगी उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा. Okay. लोकेशन यू नो दैट दिस इज माय अकाउंट नेम. बहुत ही यूनिक से फीचर्स प्रोवाइड करता है आपका अकाउंट नेम. अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस कोटास, बिलिंग डैशबोर्ड, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल और सेटिंग्स. मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड दीज ऑप्शंस कैन हेल्प अस टू मैनेज एंड मेंटेन आवर पोर्टल. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पोर्टल और को मैनेज करना और मेंटेन करना. क्लियर? Yep. So this is the identification of our portal, basic identification of our portal. Please go through the topics that we completed today. If you have any question, doubt, or suggestion, let me know. Sure, sure. Sure. We are going in the right pace, Manjit. Thank Yeah, you. I think this is what we need actually. Initially, thoda sa, I think then we'll catch up. नहीं. So we will try to just complete the entire task from very basic, ताकि in med आपको कोई भी सर्विस का नाम बताएं और आप आसानी से उसको एज्यूम कर सकें कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है. बिकॉज यू हैव आइडिया अबाउट द बैकएंड कि हाँ ये Yeah. स्टोरेज लोकेशन यहाँ होगी, फिर उसके बाद बैकअप यहाँ बनेगा, काइंड ऑफ थिंग. तो हाँ, हाँ. वो माइंड में सिनेरियो होना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. Okay. नॉट ओनली फॉर अमेजन. कल की डेट में आप किसी दूसरे क्लाउड पोर्टल पे जाएंगे तो उस केस में भी आपके पास जो आइडिया है ना, जो ये स्ट्रक्चर है, ये सबके लिए सेम है. इट्स नॉट Okay. एप्लीकेबल. Oh, got it. समझ गया. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन? नहीं, I think so far so good. So ठीक है. next, so हम लोग what I'll do is I'll create AWS new account and we will get into all the things. I mean, एक बार वो कर दे करके we'll be ready. And then प्लीज. next class कब होगा? Saturday, सैटरडे. right? Same time. We same link. हाँ, सेम लिंक. इफ एनी चेंजेस आई लेट यू नो बिफोर 2 days. मतलब चलो. अगर कोई लिंक चेंज होता है या कुछ भी चेंज होता है 2 दिन पहले. वैसे 1-2 कैंडिडेट और हैं जो ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली अभी उनका मैसेज आया था शाम को कि आज वो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू वीकेंड. वो मेरे साथ बात कर रहे हैं कहीं पे. तो लेट मी सी, बिकॉज अगर एक क्लास और हो जाएगी तो वी आर अनेबल टू ऐड एनीवन, क्योंकि फिर 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम हम नहीं दे पाएंगे डेफिनेटली. हाँ, right, right. उनके लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा. तो विल क्रिएट अनदर काइंड ऑफ बैच. ठीक है. ठीक है. विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन 1 घंटे लग जाएंगे इन नेक्स्ट 1 hour. चलेगा, चलेगा. चलो डन करें आज के लिए इतना.
Yes, ठीक है, sir. no Thank you. worries. Thank you so much. My pleasure. Take care. Bye bye. चलो, bye, good night.